Assalamu alaikum viewers, I am Dr. Hain. I am working as a consultant endocrinologist, MTI DHQ Hospital, Bannu. In today's video, we are going to discuss about diagnostic criteria of acromegaly. In the last video, we had a focus on what is acromegaly, what are the clinical manifestations, and what are the probable causes of acromegaly. So the basic screening test for acromegaly is serum IGF-1, that is insulin-like growth factor 1. Keep in mind that a normal serum IGF-1 level rules out active acromegaly. Means if your serum IGF-1 is normal, there are very remote possibilities of acromegaly being diagnosed to the patient. The diagnosis of acromegaly is basically a biochemical one. This is important thing to note, that the diagnosis is actually biochemical one. It means that the typical phenotypic picture of acromegaly and the pituitary presence of a tumor, these both things are not essential for diagnosis, but the biochemical picture concordant with acromegaly is important, and it is essential for diagnosis. It means that any patient with phenotypic features or pituitary presence of a tumor should have raised IGF-1 levels before labeling that patient as an acromegalic patient. So the basic screening test remains IGF-1 levels. If it is normal, you don't need to go further into the diagnostic tests. But if the serum IGF-1 levels are raised, then the second step is OGTT with growth hormone levels, that is oral glucose tolerance test with growth hormone levels. If the growth hormone levels are normal, again the active acromegaly is ruled out. But if OGTT suggests raised growth hormone levels, then there are strong possibilities of acromegaly. So your next step would be pituitary MRI. Again, there are two possibilities in your pituitary MRI imaging. One possibility is that it shows some mass or empty cella, then your diagnosis is almost confirmed. But if the pituitary MRI is normal, you should search for the ectopic causes. And for the ectopic causes, you need to have chest and an abdominal CT scan to rule out the ectopic source of growth hormone. There might be some islet cell tumor secreting growth hormone, or there might be some lymphoproliferative disorder that is secreting the growth hormone. Again, if chest CT and abdominal CTs are normal, but you are having a strong suspicion of acromegaly, then you can have catheterization studies, that is to know about the arteriovenous gradient of growth hormone levels. Or if catheterization studies are normal, you can have a DOTA TAT scan, that is the latest modality of investigating growth hormone access. The next question is how to interpret the 75 gram OGTT with growth hormone levels. Whenever you give glucose to a patient, the counter-regulatory hormone, that is the growth hormone, that needs to be suppressed. Naturally, जब आप ग्लूकोज देते हैं ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस हो जाना चाहिए, लेकिन in acromegaly patients, because there is excess growth hormone secretion, so ये जो रूटीन की सप्रेशन होती है आफ्टर ग्लूकोज इंजेक्शन, ये नहीं होती है. और growth hormone even after glucose intake, growth hormone levels फिर भी ज़्यादा होते हैं. सो ये जो रूटीन की सप्रेशन है, ये आपको नहीं मिलती. अगला जो क्वेश्चन है कि वाई वी नीड टू हैव 75 ग्राम OGTT विद ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इफ़ द सीरम IGF-1 लेवल इज़ एलिवेटेड. हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है रेज्ड IGF-1 अगर हमें मिल जाए. सो द आंसर इज़ दैट देयर आर सर्टन वेरिएशंस इन सीरम IGF-1 लेवल, और उनमें जो सबसे प्राइमरी वेरिएशन है, दैट इज़ द एज फैक्टर. जो IGF-1 लेवल्स होते हैं जो प्यूबर्टी के दौरान हाईएस्ट होते हैं, और प्यूबर्टी के बाद स्लोली ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम इनके लेवल्स डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं.
और ओल्ड एज में IGF-1 के लेवल्स सिग्निफिकेंटली लोअर होते हैं। कुछ कंडीशन है जिसमें IGF-1 आपको नेचुरली लो मिल रहा होता है, जिस तरह से किसी पेशेंट को रीनल फेलियर है या हेपेटिक फेलियर है या हाइपोथायराइड पेशेंट है या माल नरिश्ड है या पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 1 डायबिटीज़ है या कोई पेशेंट अगर ओरल एस्ट्रोजन यूज़ कर रहा है। सो इन कंडीशंस में जो डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी है IGF-1 की वो सिग्निफिकेंटली इम्पेयर हो जाती है, लो हो जाती है, और आप एक्टिव एक्रोमेगली को मिस कर सकते हैं अगर आप सिर्फ IGF-1 को एज ए डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट डायनेमिक स्पेसिफिक टेस्ट और जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एक्रोमेगली का वो क्या है। सो दैट इज़ बेसिकली 75 ग्राम OGTT विद ग्रोथ हार्मोन लेवल्स। एक नॉर्मल पेशेंट में जहाँ पे आप ग्लूकोज इंजेक्शन के बाद ग्रोथ हार्मोन लेवल्स देखते हैं 2 आवर्स आफ्टर ग्लूकोज इंजेक्शन, उनमें ग्रोथ हार्मोन लेस देन 1 नैनोग्राम पर ml तक डिक्लाइन हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन इन एक्रोमेगलिक पेशेंट्स जो डायग्नोस्टिक कट ऑफ यूज़ होता है दैट इज़ मोर देन 1 नैनोग्राम पर ml। दैट इज़ अगर आप किसी पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, सो 2 घंटों बाद अगर आप ग्रोथ हार्मोन लेवल्स कराएंगे दैट वुड बी मोर देन 1 नैनोग्राम पर ml। एंड इन ओवर 85% ऑफ द केसेस आपके जो ग्रोथ हार्मोन लेवल्स होते हैं 2 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज these are basically more than 2 nanogram per ml। इन सर्टन केसेस जहाँ पे आपकी जो क्लिनिकल सस्पेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके जो सीरम IGF-1 लेवल्स हैं और 75 ग्राम OGTT विद ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग जब आप कराते हैं दोनों नॉर्मल आ जाते हैं। इन सच सेटिंग्स आपके पास IGF-1 बाइंडिंग प्रोटीन 3 IGF-BP3 उसका ऑप्शन मौजूद है, इनके वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के साथ आप ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक और जो रेयर टेस्ट यूज़ होता है दैट इज़ L-DOPA जो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन एक्रोमेगलिक पेशेंट्स में ये ग्रोथ हार्मोन में जो डिक्लाइन आता है आफ्टर L-DOPA वो आपको नहीं मिलता। लेकिन ये जो तीनों टेस्ट मैंने जिनका भी जिक्र किया ये बड़े रेयर है और प्रैक्टिकली वेरी रेयरली परफॉर्म किए जाते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस को बढ़ाता है। L-DOPA जो है उसके अपोजिट इफेक्ट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये दोनों टेस्ट या IGF-BP3 जो है ये बहुत रेयरली यूज़